Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. We will now be going live on Facebook. Assalamu alaikum and good evening to all of you. On behalf of Generation School, I welcome you all to the first parenting webinar, and it is one of its kind. And the topic of the webinar is child well-being today, raising resilient children. आइए आज की महफिल का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं. And for that, I would like to invite Mr. Shoaib Siddiqui, Director Generation School, to recite Surah Ad-Duha. जी. Right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. We'll be reciting Surah Duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. By the morning brightness and when the night is still, your Lord has neither forsaken you nor distanced from you. And indeed, the hereafter is better for you than the present. And verily, your Lord will give you all good
so that you shall be well pleased? Did he not find you an orphan and gave you a refuge? And he found you unaware and guided you? And he found you poor and made you rich? Therefore, treat not the orphan with oppression, and repulse not those who ask, and proclaim the grace of your Lord. Sadaqallah al-Azim. Subhanallah. I would like to introduce myself. I'm Uzma Shakil, and I'm the Vice Principal here of the Senior Wing at Generation School. So indeed, it's a pleasant evening. I wish we could all have met face to face. However, due to these pandemic situations, Allah Ta'ala has created lots of opportunities and lots of creativity is taking place that we are meeting virtually. Chat is open for all of you. Please feel free to comment and send your questions to the Q&A host in the chat box. We also welcome our viewers on Facebook. You can also send your questions and we'll inshallah incorporate them during our panel discussion. Mashallah, we have already received around 300 questions last week, and we have tried to incorporate them and we'll address as many as we can during this panel discussion. Let me share what's the end in mind for this session with you all. Mr. Shahzad, can we have the next slide? Right. As you can see that, inshallah, we want to raise aspiration of our parents to learn the importance of child well-being. हम चाहते हैं कि हम वो ज़ौक़ इंशाल्लाह आप इस सेशन के थ्रू, इस पैनल डिस्कशन के थ्रू एज पेरेंट्स आप वो ज़ौक़ पैदा हो आपके अंदर कि आप मज़ीद अपने बच्चों की वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए कोशिशें करें. And inshallah, our panelists, we have got, inshallah, I'll be introducing them in some time. They'll be addressing key issues and challenges of child well-being and will provide practical solutions. And we'll understand the relationship between well-being and resilience through this parenting seminar. Ji. Yes, it gives me immense pleasure to introduce our honored panelist. I'll start with Dr. Shelina Bhamani. Dr. Shelina Bhamani holds a PhD in education with specialization in early childhood development and program monitoring. Currently, she is associated with the Aga Khan University in capacity of assistant professor, research and leading parenting education program. She has worked in various national and international organizations. She additionally has more than 8 years of teaching at different universities. Dr. Bhamani has published nationally and internationally to advocate education and development and is a die-hard early childhood enthusiast. She's also a member of the Board of Directors, International Affairs and International Childbirth Education Association, USA. We welcome you, Dr. Shelina Bhamani. It's an honor that you're here. Thank you, Uzma, so much. Pleasure. Then we have our esteemed panelist, Mr. Sohail Zindani. Mr. Sohail Zindani is one of Pakistan's most sought after and effective trainers. He's the founder and CEO of Learning Minds and the Sohail Zindani Company. Sohail Zindani is a keynote speaker, leadership talent, and corporate consultant. His journey spans over a decade that includes helping organizations to build and develop learning culture, transformational leadership, and advises businesses to thrive. He specializes in creating leadership development journeys, culture building initiatives, and developing learning organizations. Definitely, we are going to treasure your feedback today and your advices that you're going to give us and to the parents. Thank you so much. Then our distinguished panelist, Mr. Fazal Niazi. Mr. Fazal Niazi is an inspirational trainer and change agent with a vast experience in transforming the educational sector in Pakistan. He's the serving country head practice lead at Franklin Covey Education. And we know, we have experienced that he's an inspirational coach and helps in aligning and pathfinding for institutions to achieve their goals. Thank you. Jazakallah so much for you to be here, Mr. Fazal Niazi. Assalamu alaikum and thank you. I really feel honored in introducing Dr. Ghazala Siddiqui, who is a visionary leader redefining the teaching and learning ecosystem. She has been leading Generation School since its inception in 1990. Originally trained as a medical doctor, Dr. Ghazala has spent her entire career furthering the pursuit of quality in teaching and learning.
She has designed and implemented structures at Generation School that seeks to achieve holistic development of the students. She believes in inspiring and elevating teachers' aspirations through professional development and reflective practice to realize the impact that they can create and transform the lives of their students, their families, and the wider world. Thank you so much, Dr. Ghazala Siddiqui, for gracing the event. Yes, Jazakallah khair, and thank you so much. Assalamu alaikum to everyone. Right. Now on the screen, you can see a poll on the screen, right? Mr. Shazad, can we have a poll? We thought that in order to set the pace and direction of today's webinar in a more focused manner, we could have a poll, and these are just 3 questions, and you could take 2 minutes to attempt it. My battery is running low. On the Facebook, you wouldn't be able to view the poll. I'll give a feedback, inshallah, so that we can, take you along with us through this poll. I'll share the result of this poll in the meanwhile. Right. You can see how the questions. The first question I can tell you, I'm well aware of the terms well-being and resilience, and 1 being the lowest and 4 being the highest. And I'm satisfied with my child's well-being in the current pandemic conditions. And the third question is, I'm keen to learn tips to enhance the well-being of my child. So we'll wait for some more responses, and inshallah we'll proceed. Mr. Fazal, Niazi, Mr. Sohail Zindani, Dr. Shelina Bhamani, and Dr. Ghazala Siddiqui. I'm sure this poll will help you set the pace of your discussion as well. Maybe we'll take 30 seconds more. Right. That, alhamdulillah, people are keen here to learn tips to enhance the well-being of their children.
And we've got the highest score here, and they're keen to learn, and that is the main objective of today's webinar. And then they're like, you know, around 87, I would say 90% people who are not really, I would say, very satisfied with their child well-being and during this current time. All the more reason to give suggestions during this time, how to go about with our child well-being. And then I see that even here, 43, around 9% people want to know more about resilience and child well-being, the terminologies, and there are some who know it well. And inshallah, I'm sure your questions are going to raise our knowledge as well. So we'll have, inshallah, we'll synergize together, and I'm sure today's session is going to be full of learning, right? So I'll move ahead. Only yesterday, this, I would say this poll, this research, instance research, really, you know, reminds me of an article that I read on Harvard Business Review. And it said that 85% of survey respondents said that their general well-being has declined since the start of COVID-19. And it shows here in the poll as well. This is our worry. ये हमारी भी worry है और आपकी भी worry है. अच्छा, I was just thinking कि थोड़ा मैं child well-being को मैं unpack कर देती हूँ. In simple words, child well-being क्या है? बच्चों की फलाह बहबूद को जो है child well-being कहते हैं. It is a state of being comfortable, healthy with a sense of contentment. Well-being जब बच्चों में develop होती है, then they have a sense of purpose in their life and they live with a positive self-image. Resilience क्या है? Resilience उठ के गिरना, गिर के उठना और साबित कदमी से आगे बढ़ते रहना, इसी को resilience कहते हैं. और दोबारा उभरने की कुव्वत को resilience कहते हैं. Hence, it is the ability to bounce back from stress, failures, and challenges in life. And inshallah, our panelists are going to add on to this, that how we can, through child well-being, how resilience can be developed. Shehzad, can we have the next slide, please? Right. Stephen Covey, a motivational speaker, personally, he really motivates me. And he once said, human beings are four-dimensional: body, mind, heart, and soul. अब जो मैं बात कहने जा रही हूँ, ये मैंने खुद परसीव की है. मे बी यू माइट अग्री विद इट और नॉट, लेकिन मैं इस तरह देखती हूँ, जब भी मैं एक कोटेशन पढ़ती हूँ, मुझे एक जो है ना, अल्लाह ताला ने जो ये यूनिवर्स क्रिएट की है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस नो कि ये 3 डायमेंशनल है, एंड ही हैज क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग 4 डायमेंशनल. तो यानी अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, इस दुनिया को हमारे लिए मुसक्कर कर दिया. ये 3 डायमेंशन सर्व कर रहे हैं 4 डायमेंशंस को. He has made this world for service to mankind and not the other way around. और इसको बहुत प्यारे अंदाज से अल्लामा इकबाल ने फरमाया, न तू ज़मीं के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए. So yes, there are problems around, there are dips around, but it is for us, it's our firm belief कि अल्लाह ताला ने solutions भी हमारे इस दुनिया में रखे हुए हैं. And that is why we have gathered here. और चलें जानते हैं अपने एक्सपर्ट से कि इन challenges को कैसे face करना है और practical solutions क्या हैं. So my first question to Dr. Shelina Bhamani, it's to you, that the main concern nowadays we see, and we received in our questions as well, that many children, and because since we have got online, most of the children are confined to their rooms, they are just on their gadgets, and they have got mood swings, they don't want to go outside for physical activities. So what is your stance on physical well-being of the child and how to develop resilience? Over to you, Dr. Shelina. So thank you so much, Azma. First of all, हमारे ये cognizant होना बहुत ज़रूरी है कि pandemic has really changed the landscape of well-being. पहले जो है वो well-being define होती थी, थोड़ा सा बच्चों का mood swing होता था, तो हमारे पास काफी ज़्यादा alternatives होते थे. But nowadays, alternatives are very limited. So as parents, we need to understand what alternatives are available and what is safe for their physical well-being as well as their overall holistic well-being. So I'll give 3 tips right now to the parents. A, limit the zones of your house. So अपने house में आप zone बनाएं कि ये technology zone है, ये non-technology zone है. So this way, you know, that is particular zone where your children will be inclined to screen, and in other zone, your children will be screen free.
Also in your house, make a physical activity zone. So for instance, balcony could be dedicated as one of the physical activity zone, whereby whenever you get into the balcony, you have to do little yoga, you have to do little exercise. Second, it's very important कि in times of pandemic, हर चीज जो है हमारी कंट्री में proper lockdowns नहीं हुए. It's not 100% lockdowns. It's a partial lockdown. So we need to understand by following SOPs, we can still take children outside. We can still take children to parks. We can still join some outdoor activities जिसमें बच्चों की जो है वो physical exercise हो सके, वो nature के करीब जाएं. Third, it's very important to call off a day जहां पर हर कोई बाहर outing पर जाए. Get yourself engaged in some of the sports activities. एक या दो sports माँ बाप खुद करें बच्चों के साथ. And the fourth, but the most important one is role model behavior which lead towards physical health being. So if I want my children to be physically active, I need to be physically active first. I need to demonstrate that. I need to get up. I need to be quick. I need to be the one walking. I need to be the one starting my yoga and meditation, and kids will follow. So if we follow these 4 tips, I think we will be able to now provide lots of support to our kids pertinent to their physical well-being. Over. Dr. Shelina, what about the impact of nutrition, exercise? You talked about exercise, but could you highlight maybe could you give some practical tips regarding the nutrition that they could be taking? I was attending one of your webinars and you were talking about that, and I felt that is really it was very pertinent to be shared with the community. Thank you, Uzma. So मैंने एक slideshow भी बनाया है, तो उसमें भी there'll be some more details as well. There is a very good rule when it comes to nutrition. So when we say nutrition, we have 10, 8, 5, 3, 2, 1, 0 rule. Now what is 10? 10 hours of sleep. 8 glasses of water. 5, our plate should composite of at least 3 vegetables and 2 fruits. That should the meal look like every single time we take a meal, right? What is 3 is eating 3 times a day, not skipping the breakfast, not skipping the lunch, not skipping the dinner. So eating at least 3 proper meals a day. 2 means more than or at least 2 hours of physical exercise. So बच्चे जब से 3 साल से लेके 18 साल तक के होते हैं, minimum 60 minutes of physical exercise is must. Similarly, when we say 1, less than 1 hour of leisure screen time, and 0 means 0 carbonated sugar, which means हमें बहुत smartly बच्चों की जो है वो sugar को exchange करना है. When we talk about nutrition, nutrition is highly interlinked with other practices as well. So nutrition is not just कि हमने throughout बच्चे को जो है वो बस eggs खिला दिए, protein खिला दिया, vitamins खिला दिए. Nutrition is a very holistic approach. So holistic approach to nutrition is good sleep, good plate proportion, good portion of things that we eat. In times of pandemic, it's very important कि बच्चों को हम जो है nutritious food खिलाएं, वैसे वाले जो इसमें vitamins हो. Vitamin की बहुत बड़ी deficiency है पाकिस्तान में. So we should allow our kids to have more vegetables, more fruits which has vitamins. अभी orange का season था, so orange a day is a very good thing. Similarly, you can have बच्चे को dry fruits बहुत खिला सकते हैं, walnuts, some almonds, some type of cashew nuts. So have that type of portion to kids. बच्चे जो हैं वो बहुत healthy food की towards attract नहीं होते हैं. So it's very important to rebrand. बच्चों को कोई भी टेस्ट पसंद नहीं होते हैं, जो आपके नगेट्स का टेस्ट होता है या बाहर के बर्गर्स होते हैं. दे आर प्रीटी मच अट्रैक्टेड बिकॉज उसमें वो अट्रैक्शन एलिमेंट होता है. सो हम अपने न्यूट्रिशन को एक अट्रैक्टिव एलिमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ योर किड्स वांट पिज्जा, टेक अ ब्रेड. आप घर में ही आटा गूंद दें, घर में ही अच्छी सी रोटी बनाएं, उसको ब्रेड का शेप दें एंड मेक अ पिज्जा फॉर योर किड. So nutrition has to be a holistic, nutrition has to be interesting to the kids, and nutrition should have some value which our kids need in times of today. And the best thing to boost immunity is provide lots of vegetables, fruits, and homemade food. So maybe in a week time, आप park कर लें कि एक meal जो है वो सिर्फ cheat meal होगी, rest of the meals will be homemade meal. Probably Thursday night, there'll be no fried food in the house. So you'll have to schedule your nutrition practices in order to eat healthy, feel healthy, be healthy. And kids adapt all these routine very well. Over. Thank you. Thank you, Dr. Shelina.
what I've gathered through your conversation is role modeling. Role modeling is a must. ऐसा ना हो कि हम बच्चों को तो बात करें कि that you take healthy meal और हम छुप के जो है वो order कर रहे हो junk food, you know. So thank you so much. Yes, and and you talked about exercises, physical exercises. Within the limited alternatives, there are, I would say, lots of things that we still can do. Thank you so much, Dr. Shelina. My next question is towards Mr. Fazal Niazi. जी फजल साहब, आजकल जो हम एक बहुत चीज जो बहुत सुनते हैं वो ये है, अम्मी पापा तो हमारी बात ही नहीं समझते, और यही चीज जो है पेरेंट्स कह रहे होते हैं क्या करें, कहाँ रिस्पेक्ट का चली गई है बच्चों की, कोई जो है रिस्पेक्ट का एलिमेंट ही नहीं रहा है. व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या है इस पे कि टू strengthen my child's emotional well-being, how can I build that, you know, relationship with the children? Over to you. जी, थैंक यू मैडम उज़मा. पहला तो ये है कि एक सवाल कि कभी सेल ना हो रही हो ना कहीं पर, तो तरबियत किसकी होती है, क्लाइंट की, खरीदार की, या सेल्समैन की. और अगर बच्चे बात नहीं मान रहे तो असल में तवज्जो कहाँ देने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है. और इसके लिए मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ और उसके बाद हम थोड़ी सी और बात करेंगे. मैंने रेडी करके रखी थी कि हम शेयर कर लें. Mr. Shehzad, are we running it? जी, आ रही है हमारी आप खुद रन कर मेरी स्क्रीन नजर. जी, मैं खुद रन कर रहा हूँ. मेरी स्क्रीन नजर. जी नजर आ रहा है. जी नजर आ रहा है. ओके जी. जी, सो बीइंग अ पेरेंट हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के दिलों में भी झांक के देखें कि उनके अंदर क्या चल रहा है. और अभी मुझे आप ही के जनरेशन्स के अंदर ही जो हमारा नॉर्थ कैंपस है वहाँ क्लास 2 में इत्तेफाक हुआ कि जब उनसे पूछा गया कि आप स्कूल में क्या चाहते हैं, कैसा फील करना चाहते हैं, तो उनके जो जवाब थे उन्होंने मुझे बहुत हैरान किया. और उनके उन जवाबों की मैंने बाकायदा तस्वीर भी ली, जिसमें वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं हमें
हमारे वर्थ के ऊपर वैल्यू किया जाए, हम रिस्पेक्टेड फील करना चाहते हैं स्कूल में, हम घर जैसा माहौल चाहते हैं, वुड लव टू हैव फन। तो ऐसा ही है कि जब तक हम अपने बच्चों के साथ बैठ करके वो गुफ्तगू नहीं करेंगे जिसके ऊपर हम कहते हैं कि जी वो मेरे पास जो प्री क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी यही कह रहे थे कि बच्चे जो है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं घर पे और हमें उनसे कैसे। तो कभी हमने अपने बच्चों से नहीं पूछा होगा कि मेरी कौन सी फेवरेट थिंग्स हैं जो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, या मैं तुम्हारे बारे में क्या कहना चाहता हूँ। इस तरह की गुफ्तगू उससे अपने बारे में और अपने हम उसके बारे में एक्सरसाइज करें। तो मैंने इसके लिए एक वर्कशीट शेयर भी की है जो कि पार्टिसिपेंट्स को मिल जाएगी, मैडम मनिका शेयर कर लेंगी। पर्पस इसके हम अपने बच्चों से उनको एक्सप्लोर करें कि वो चाहते क्या हैं और अगर उनका बिहेवियर ऐसा है तो क्यों है। और पेरेंटिंग में भी अगर हम देखें तो हम 4 तरह के पेरेंटिंग में मोड में हो सकते हैं। एक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है, एक अथॉरिटेटिव है, एक परमिसिव है और एक अनइन्वॉल्व्ड है। और इसमें सबसे जो बेहतरीन है वो अथॉरिटेटिव है, जिसमें हम सर्टेन लाइंस, जैसे शनीला ने कहा कि हमें अ, ऐसे जोन बनाने होंगे जहां हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें मॉडल करना होगा। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इज द बेस्ट वन, जिसमें हम बच्चों के साथ सपोर्ट भी होते हैं और एक लाइन भी ड्रॉ कर रखी होती है हमने। नॉर्मली आजकल जो हमारे वालिदैन हैं वो ज़्यादातर परमिसिव है, और परमिसिव के अंदर जब हम पेरेंटिंग कर रहे होते हैं तो फिर हमें ये शिकायतें मिलती हैं जो नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चंस में भी आई हुई हैं कि बच्चे हमें डिक्टेटर समझते हैं या हमें वो सही तरह से बिहेव नहीं कर रहे होते हैं हमारे साथ। तो हमें अपने पेरेंटिंग स्टाइल, ख़ास तौर पे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि वो किस तरह होता है। और कोई भी वक्त जो है वो ज़ाया नहीं गया होता, किसी भी वक्त हम करेक्शन मोड में आ सकते हैं। सिर्फ अपनी नॉलेज और इल्म में इजाफे की बात होती है। जी मैडम उस्मा। जी नियाजी साहब, जी जजाकल्ला फॉर दैट। कुछ एम्पैथिक लिसनिंग पे आप जो है कुछ हमें बताएंगे कि अगर हम वो डेवलप करें एज पेरेंट्स तो जी जी उससे क्या फायदा होगा हमारी चाइल्ड की वेलबींग पे, उनके हार्ट बिल्कुल पे, उनके बिल्कुल। इमोशंस पे। जी जी जैसा मैंने शेयर किया, मैंने कहा कि आपको एक वर्कशीट भी शेयर की गई है, दैट इज अबाउट एम्पैथेटिक लिसनिंग, जिसमें हम पहले तो बात सुने सिर्फ इसलिए कि उनकी बात समझने के लिए बैठे हैं हम। इंटेंट हमारा हमारा जो एंड इन माइंड है वो ये होना चाहिए कि आज मैं उसको जवाब देने के लिए नहीं बैठा, उसकी करेक्शन के लिए नहीं बैठा, बल्कि उसकी बात सुनने के लिए बैठा हूँ। और उसका तरीका क्या है कि जब आप उसकी बात सुन रहे हो तो जो उसकी फीलिंग है उन फीलिंग्स को आप भी रिफ्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत वजाहत से गुफ्तगू करती है आपके अल्फाज के मुकाबले में। और ना सिर्फ आप बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट कर रहे हो, उसकी बात को अपने अल्फाज में दोहरा भी रहे हो। और अगर किसी के दिल के ताले को खोलना है तो एम्पैथेटिक लिसनिंग ही वो चाबी है जो लोगों के दिलों के तालों को खोलती है। तो अगर हम बिल्कुल उनके साथ बैठे 1 to 1 और सिर्फ इसलिए बैठे कि आज हम इसको समझेंगे, इसका बिहेवियर क्यों है ऐसा, और आप यकीन जानिए कि अगर आप ये तरीका इख्तियार करेंगे तो आपके सामने वो बात भी खोल के रखेंगे जो नॉर्मली आपसे शेयर नहीं कर रहे होते। बी प्रेजेंट, यूज योर बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो उसकी है, और अल्फाज आपके हो, बात वही हो जो आपके साथ जो कर रहा है उसकी। तो उससे ज्यादा आपको समझने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बच्चा का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो वो आपसे वो बातें भी शेयर करेगा जो नॉर्मली हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे होते। और अगर इमोशनल हम उनको नहीं देंगे फीलिंग, उनको हम ये फीलिंग नहीं देंगे कि हम हैं जो तुम्हारी बात समझने के लिए सुनते हैं, तो फिर उनको बाहर कोई ऐसा मिल जाएगा और फिर ये बिल्कुल उसको वो कहाँ ले जाता है ये फिर हमें बाद में पता चलता है जब वो वहाँ पहुंच चुका होता है। तो बिल्कुल। हमें अपने बच्चों के साथ एम्पैथेटिक लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हमारे यहाँ एक तस्वुर है जो उस तरह से राज नहीं है जिस तरह से दुनिया में है, कि कभी कभी हमें अपने बच्चों के साथ डेट पे जाना चाहिए, किसी एक के साथ 1 to 1, और
वहां जाकर के उससे एम्पैथेटिक लिसनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये हमेशा इंडिविजुअल होना चाहिए। मैंने आज इनके एक सवालों के जवाब में भी था कि सेलिब्रेट इंडिविजुअली, कलेक्टिवली नहीं, सेलिब्रेट इंडिविजुअली। देयर मस्ट बी अ फैमिली टाइम जिसमें हम एक साथ बैठे हुए हों, और ट्रीट किड्स फेयरली नॉट इक्वली। ये भी आप याद रखें कि बच्चों को फेयरली ट्रीट करें, ना कि इक्वली ट्रीट करें। फेयरली इंपॉर्टेंट है, इक्वली नहीं है। तो ये छोटी सी गुफ्तगू थी कि आपको एम्पैथेटिक लिसनिंग, आपको इसको स्किल है, आपको पैदा करनी होगी। अब पहला इंटेंशन क्यों, और वो क्यों ये है कि आप समझने के लिए सुन रहे हैं, कैसे उसकी बात को दोहराना है अपने अल्फाज में, और उसकी फीलिंग्स को भी रिफ्लेक्ट करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो वो ज्यादा ओपन अप होंगे और आपसे खुल के बात करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने फजल साहब, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए और 1 जबान दी। हाँ जी। तो मोर ऑफ लिसनिंग एंड लेस ऑफ स्पीकिंग, वेरी ट्रू। और जो बात आपने बिल्कुल बात की, फेयरली एंड नॉट इक्वली, तो वही यस बात है कि इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी होना चाहिए। जी। बिल्कुल सही कहा। इस पे मुझे अल्लामा इकबाल का एक और शेर याद आ रहा है, अच्छा है दिल के हाथ रहे पासबानी अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ देना चाहिए। तो इमोशनल वेलबीइंग के लिए कभी कभी जो है वो दिल की बात भी मान लेनी चाहिए। जी बट जी। that doesn't really undermine the mind part, the intellectual part of our body. तो उसके लिए मैं मिस्टर सोहेल जिंदानी साहब से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। सोहेल साहब जी। Yes. Yeah, so like the question is, managing children's mental well-being seems to be a big challenge nowadays in this fast-paced world, जहाँ पे competition, cutthroat competition, material success has become really popular criteria. So like, what is your stance on that? That how can we develop our child's mental well-being, especially during these times? और हम resilience कैसे पैदा कर सकते हैं बच्चों में अभी आजकल के दौर में? So first thing first, I think I'm enjoying the conversation myself. It's amazing, it's profound. और मैं आगे कुछ भी बोलूं उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है मेरे ख्यालात का इजहार करने के लिए। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि मेरे ख्यालात किसी को ना अच्छे लगे, which is so good. In that is what makes us beautiful, right? अगर मेरे ख्यालात सबको अच्छे लग गए यानी मैं कोई एक नेक्स्ट लेवल ऑफ करप्शन पे चल रहा हूँ। आई थिंक हम इस पर्सपेक्टिव को मैं पुट अप करूंगा एंड देन आई गेस क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उसमें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो वर्ड यूज हुआ है रेजिलियंस का, दिस इज सच अ फैंटास्टिक वर्ड, और आजकल इस अल्फाज का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है। ये डिक्शनरी में हमेशा से था, इस्तेमाल बढ़ गया है। और आज सुबह जब मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू पुट डाउन माय नोट्स टुगेदर कि आज मैंने बोलना क्या है, सो मैंने ये सोचा कि रेजिलियंस को अगर मुझे लेबोरेटरी में बनाना हो अगर, तो मैं इसके अंदर क्या क्या डालूंगा तो रेजिलियंस बन के निकलेगा। तो आई थिंक रेजिलियंस के लिए 3 कंपोनेंट्स बहुत जरूरी हैं। रेजिलियंस के लिए सबसे पहले ऑप्टिमिज्म जरूरी है। अच्छा, और ऑप्टिमिज्म इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फेथ। सो सबसे पहले तो ऑप्टिमिज्म, और यहाँ मैं पॉजिटिव थिंकिंग वाले वो टिपिकल मोटिवेशनल स्पीकिंग क्लीशे की तरफ नहीं जा रहा। नहीं नहीं सब अच्छा है, नहीं नहीं सब अच्छा नहीं है, चीजें मुश्किल भी हैं, चीजें बुरी भी हैं, चीजें गलत भी हैं, वो सब अपनी जगह, बट उम्मीद कि ये बेहतर होगा। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग टू मेक रेजिलियंस, ऑप्टिमिज्म। The other thing to make optimism is courage. मैं पुरुमीद हूँ लेकिन I have to move towards it, and that I think is courage. So that's the second ingredient in resilience. So तीसरा ingredient जो मुझे लगता है बहुत दफा हम resilience के अंदर मिस कर जाते हैं वो है generosity का। When you enter resilience mode, you need generosity to sustain yourself in that phase. So I think optimism, courage and generosity makes up resilience. अब हम mental well-being के ऊपर बात करें, मैं एक क्विक और थॉट को थोड़ा सा पुट अप करना चाहूंगा। वो ये कि पैंडेमिक के अंदर मुझे तो बड़ा मजा आया। बस मजा इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतना इजी एक्सक्यूज मिल गया, ओ हो कि देखें जी हमारे बच्चों के साथ जो ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये पैंडेमिक की वजह से हो रहा है। एब्सोल्युटली नहीं। लेट मी बी वेरी ओपन अबाउट इट।
pandemic has not changed anything. It has only exposed us, and we need to be honest about it. It hasn't changed anything. What it has changed? We were running away from a lot of things, and it has just exposed us from that. Or jab tak we will not look into it with clarity, how can we resolve it? ये देखें, ये बिल्कुल वैसा ही है. यहाँ हो सकता है वो पेरेंट्स को मैं खुद एक पेरेंट हूँ, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है कि किसी ऐसी चीज पर ब्लेम डाल दें जो हमें जवाब ना दे सके. इसमें हमें बड़ा मजा आता है. आई मीन इट इज सो गुड. जनरेशन स्कूल के ऊपर ब्लेम डाल दो, बस खत्म हो गई बात, क्योंकि मैंने तो तरबियत भी इनके ठेके लगाई हुई है. सो अभी क्या हुआ कि हम लोग बतौर पेरेंट्स क्या करते थे, पहले सारा इल्जाम सेल फोन पे डालते थे, हम सारा इल्जाम स्क्रीन पे डालते थे, क्योंकि इजी है. कभी आपने देखा है सेल फोन आपको गुस्से से रिप्लाई करे कि नहीं जी ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, और सेल फोन आपको याद दिलाए कि देखें जी मैं तो चुपचाप अपनी जगह पे बैठा हुआ था, लेकिन जब आपका बच्चा खाना खा नहीं रहा था तो आपने अपनी जान छुड़वाने के लिए मुझे उसके हवाले किया था. आप सोचें अगर सेल फोन ये जवाब दे दे तो फिर क्या होगा. सो आई थिंक ये जो इजी रेस्क्यू होता है ना उन चीजों के ऊपर, वो अक्सर कहते हैं ना कि शिकार की कहानी शिकारी लिखता है, इसलिए हमेशा शिकारी ग्लोरीफाई होता है. किसी दिन शेर ने लिख दी कहानी तो फिर पता चलेगा था क्या माजरा. सो आई थिंक ये 2-3 चीजें पहले सॉर्ट कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब वेलबींग की तरफ जाते हैं तो ये जो इजी एग्जिट ब्लेमिंग है ना हमारे ऊपर, जैसे हम पाकिस्तानियों की इजी एग्जिट ब्लेमिंग होती है कि हमारे सत्यानाश का वाहिद जिम्मेदार ये ज्यूज हैं, ते अमेरिकन हैं, क्योंकि दे डोंट केयर टू इवन रिस्पॉन्ड टू अस. सो दैट इज नॉट अ वे टू लुक फॉरवर्ड. अब आते हैं हम कि हम मेंटल वेलबींग, हम इस डोमेन को कैसे इन्हांस करें. वेलबींग के ऊपर पहले डॉक्टर शनीला ने भी बात की, सो एंड फजल साहब पर्सपेक्टिव वर सो अमेजिंग एंड सो रिच. मैं सिर्फ एक चीज जो मेरा कोर बिलीफ है about child is that children come through us, they are not our properties. मतलब वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे जरिए दुनिया में आते हैं. और गुड न्यूज, कांग्रेचुलेशन, जिस तरह आप किसी के जरिए दुनिया में आए थे. अच्छा, जब ये माइंडसेट चेंज हो जाता है ना कि वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देखता, फिर मैं उसे नर्चर करना देखता हूँ. मैं ये देखता हूँ कि ये ऑप्टिमली कैसे ग्रो होता है. मेंटल वेलबींग के लिए एक कंडीशन समझना जरूरी है कि हम सबका मेंटल फ्रेम अलग होता है. ऑफ कोर्स उसकी नीड्स अलग होती हैं, स्टैंडर्डाइज तो कुछ भी नहीं होता. और इसके लिए आई थिंक जो स्कूल्स रोल प्ले करती हैं, जनरेशन स्कूल के साथ अभी पिछले चंद सालों से हमारा राब्ता मुनक़ता है, लेकिन आई हैड प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद दिस अमेजिंग amazingly human school. I call it the human school in past. लेकिन I think कि ये वक्त है मेंटल वेलबींग के लिए हम ये देखें कि what are schools for? ये schools हैं किस चीज के लिए? ये schools बने कैसे हैं? ये आए कहाँ से थे? अच्छा, हमारे यहाँ बाज लोगों को तो लगता है schools हमेशा से चल रहे हैं, ये मतलब हमेशा से, जब से इंसानियत नहीं. ये जो प्रेजेंट स्कूल ऑफ सिस्टम है, ये तो हेनरी फोर्ड की एक हमें दीवी नवाजिश है. उसको फोर्ड मोटर कंपनी में एक अच्छे ट्रेंड लोग चाहिए थे, वो स्कूलें बन गई थी, शिफ्टों पे काम करते थे, सेमी प्रोग्रामेबल रोबोट्स चाहिए थे और वो बच्चे बन के आ जाते थे. बट ओवर द इयर्स आई थिंक पीपल लाइक डॉक्टर गजाला एंड देन other researchers and thinkers and educators have improved the thing. But I think now is a time to reimagine the thing. And I think मैं यहाँ पे जितने भी listeners हैं, मैं थोड़ा सा quick जाऊँगा इसके ऊपर and then I'll go silent. Is that there are 8 areas which I believe can be of immense benefit if that is what schools concentrate and that is what teachers parents concentrate. और ये जो एक mindset है ना parents का कि जो mental well-being है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई भी well-being है. और अभी थोड़े दिन पहले ही मैम गजाला आपके लिए इसमें I'm sure एक जोक होगा, मैं कहीं किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा mental well-being and soul well-being and da. तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे तो जनरेशन में जाते हैं, मैंने soul well-being भी उनके हवाले की हुई है. I mean this is next level of comfort. I mean हद हो गई, right? So I think
there are 8 aspects which I believe schools should look into, and मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना जल्दी sum up करूं. पहला, schools should look into encouraging children to solve interesting problems. Solve interesting problems. You should be passionate about problems, because future holds problem for us that we don't have answers to. मुझे एक तो पेरेंट बताएं दुनिया में जो इस वक्त जिंदा हो, जिसने अपने बच्चों को बोला हो कि देखें बेटा इस तरह के हमने बड़े पेंडेमिक देखे, अब हम आपको बताते हैं करना क्या है. No, we were all in it together. So we will face problems that has never been faced before. Second, I think schools and parents should create an environment in which children can live with abundance and joy. Joy, joy. आप यहाँ मेरे जितने इस वक्त लिसनर्स हैं, आप में से जितनों के बच्चे 3 साल से कम उम्र के हैं, आप देखें वो वैसे ही जॉयफुल होते हैं, वैसे ही जॉयफुल होते हैं जब तक कि हम उनके सामने आ जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर मसाइल शुरू होते हैं. क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, आपको पता है हम लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं. हम बच्चों को बताते हैं कि ज्यादा जॉयफुल होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप मेहनत करें, उसके बाद कहीं जाकर आप कामयाब होंगे, फिर चांसेस हैं कि आप जॉयफुल हो सकें. व्हाट अ स्टूपिड आइडिया ऑल टुगेदर. I think the beautiful thing is to start with joy, to start with abundance. Abundance होगा तो competition irrelevant हो जाएगा. तीसरा aspect, leadership. I think this is a time for us, parents and schools, to give more and more leadership opportunities to children. फजल साहब, I'm sure इससे agree करेंगे कि वो corporate में जो हमारे पास पहुंचते हैं ना, leadership development की training में बैठने वाले, तो उनको देखकर बड़ा दिल होता है कि काश ये मामला पहले ही हो गए होते. एंड लीडरशिप की कोई फैंसी डेफिनेशन नहीं है. लीडरशिप इज व्हेन योर पर्सपेक्टिव टू लाइफ ग्रोज बियॉन्ड योरसेल्फ. आपकी जात से ऊपर जाए पर्सपेक्टिव. चौथा, आर्ट ऑफ लिसनिंग, और उसके ऊपर अभी वैसे ही बहुत बात हुई है तो मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. लिसनिंग आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को जितना इनहांस करती है शायद ही और कोई चीज करती हो. पांचवा, and I can vouch for Generation School, I can vouch for few other schools, but I can definitely not vouch it for the system. And what is that? Learning for the sake of learning. Learning for the sake of learning, not learning for the sake of earning. This has corrupted the most beautiful process of learning has been corrupted by just keeping it for the sake of earning. And I think that is, this I think is loss. So fifth is learning for the sake of learning. छठा, and I think इसके ऊपर वो जो एक क्लास होती है ना पीटी की या स्पोर्ट्स की, I think उससे ज्यादा काम होना चाहिए, and that is taking care of body, because a healthy mind only have one place to live, and that is called healthy body. You don't have any other place. कितना ही आपका healthy mind हो, if you don't have a healthy body, you don't have any damn place to live. So I think that's the sixth area that creates that mental well-being. Seventh, and I think this is something जिस पे मुझे लगता है कि एक कोर्स होना चाहिए स्कूल के अंदर, मैंडेटरी कोर्स होना चाहिए, और इस कोर्स में सबसे पहले पेरेंट्स को बिठाना चाहिए, फिर बच्चों को बिठाना चाहिए. एंड द कोर्स इज द आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर आर्ट्स एंड कल्चर. appreciating arts and culture, the feminine aspect of our creation. पूरा वक्त जब हमारा दिमाग इकोनॉमिक्स पे चलता है तो क्यों कर बाद में चलकर हम इकोनॉमिक्स के लिए लड़ मर ना दौड़े. So I think appreciation for arts and culture as a whole. And last but not the least, एक ऐसा अल्फाज, ये अल्फाज जो है ना, ये इतना कोई मतलब रैंडम यूज होता है, एंड दैट इज एम्पैथी. और मेरे हिसाब से अगर मेरी जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज सीखना है तो वो है एम्पैथी. और जब भी मैं अपनी ट्रेनिंग में लोगों से पूछता हूँ व्हाट इज एम्पैथी, तो उसका वो जवाब बहुत सिंपल देते हैं. वो कहते हैं अपने पाँव को किसी और के जूते में डाल के देखना. दिस इज अ आउटसाइड मस्जिद आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर. ये मस्जिद के बाहर की सिचुएशन होती है जहां आप अपना पाँव किसी और के जूते में डालते हैं. एम्पैथी इज वेरी डिफिकल्ट. Empathy is to understand that if I know what you know, if I feel what you feel, if I believe what you believe, I will do exactly the same thing what you just did. Is it simple? It is painstaking. And I think there has to be a very deliberate effort around it. So these are 8 things that makes mental well-being possible.
Over and out. Thank you, Mr. Sohail. Your uniqueness is really appreciated. और जो है आपके सेशंस जो हम अटेंड करते थे, आप जो है सीरियस से सीरियस बात जो है आप बड़े बेहतरीन अंदाज से करते हैं. So jazakallah for that, and we really treasure those 8 points that you have mentioned. We'll try to, like, maybe inshallah later on share on the Facebook, maybe on those, if you allow. Ji. Moving on to Dr. Ghazala Siddiqui. जी, आपसे सवाल ये है कि जैसे अभी Excuse me, Mrs. Zindani- Shakir. Excuse me, Mrs. जी, Shakir. am I audible? Would you? Am I audible? Yeah, you are. Dr. Shelina needs to probably have the leftover done. Yes, we'll do that. We'll do that later. Okay. Or Okay. yeah, we'll do that later, maybe after your because Right, it will, okay. Or we can run the slide first. We'll go ahead with that. Shazad laga dijiye. Okay. And then we'll come to you. In fact, Dr. Shelina's, I would say, presentation, if you look at it, it's going to give a summary of all body, mind, and heart. So, isko zarur aap suniye. Ji. So thank you so much for introduction. जैसे कि आज हमने पढ़ा, हमारा टॉपिक आज का है फिजिकल रिजिलियंस, यानी बच्चों में उनकी हेल्थ, उनकी वेलबींग को किस तरह हम नर्चर करें ताकि वो फिजिकली और फिजियोलॉजिकली रिजिलियंट बने इन टाइम्स टू कम और इवन इन करंट टाइम्स. So thank you so much for introduction. जैसे कि आज फिजिकली और फिजियोलॉजिकली. So thank you so much for introduction. मैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देना चाहती हूँ कि इस सेशन से मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है व्हाटसोएवर. ये एक वॉलंटरी सेशन है और यहाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन या पिक्चर्स शेयर की जा रही हैं वो एक ओपन सोर्स से ली गई हैं. चार टाइप की रेजिलियंस होती हैं: मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल. एंड ऑल ऑफ दीज आर इंटरलिंक्ड. हमारा माइंड और बॉडी, हमारी माइंड, बॉडी, सोल, तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं. हमारे जितने भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है दोज आर इंटरलिंक्ड टुगेदर. एक का इफेक्ट दूसरे पर ज़रूर पड़ता है. सो नथिंग इज़ अ प्रायोरिटी. नीदर नेचर इज़ अ प्रायोरिटी नॉर नर्चर इज़ अ प्रायोरिटी. बोथ गो हैंड इन हैंड टू डेवलप रेजिलियंस. इसी तरह से domains of development of children and human being are also interlinked. There's a very good two quotations that I would like to quote here. The mind and body are not separate. What affects one affects the other. And health is a relationship between you and your body. इससे पहले हम कुछ टिप्स पे बात करें, हमारे पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टेटस है हेल्थ एंड वेलबींग का, वो समझना बहुत ज़रूरी है. पाकिस्तान वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड है चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन में, यानी हमारे यहाँ बच्चे अपने हाइट और वेट के हिसाब से कम होते हैं. लड़कियों में अनीमिया की बहुत शिकायतें, एडोलेसेंस स्पेशली, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये हमारे इंडिकेटर्स एडल्ट्स में बहुत बढ़ रहे हैं. विटामिन डेफिशिएंसी, हमारा हर दूसरा तीसरा आदमी जो है विटामिन डी डेफिशिएंट है. हमारे यहाँ स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारे मुल्क में लोगों की बहुत कम है, बहुत वल्नरेबल है और बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है. सो हम एज नेशन कोई अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं इन हेल्थ एंड वेलबींग. The reason is because we are not physically resilient. We have to learn to be physiological resilience, and this is what we need to promote in our children. When we talk about physiological resilience, तो ये कुछ indicators हैं जो resilience को define करते हैं. कितना हम में stamina है, यानी कितनी देर तक हम भाग सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, क्या हम 1 घंटा बैठे तो नहीं रहते हैं काउच पर, हम चलते फिरते रहते हैं, कितनी हम में स्ट्रेंथ है, क्या हम वेट उठा सकते हैं, क्या हमारी बोन्स में वो स्ट्रेंथ है, क्या हमारी बॉडी वो इतनी एजाइल है. I've just got to know that some of you cannot are unable to listen to the presentation. We'll inshallah send it on Facebook as well.
So don't please be worried. We'll continue with the presentation for those who can listen to it. Ji. Or I can simply, Dr. Ghazala, narrate it if that's okay, if you can put up the presentation. Yeah, that we can do. Yeah, that we can do. लगा दीजिए presentation लगा दीजिए. Shahzad? Ji, Dr. Shelina? Thank you so much. Like we were saying, what stamina do we have as kids, you know? What stamina do we have as adults? So stamina is one of a very good physiological resilient component जो कि हमें अपने बच्चों में build करना है. Another thing is strength. कि हमारी body में कितनी strength है? क्या हम 2 staircase चढ़कर थक जाते हैं? क्या हमारे बच्चे आधा घंटा भागकर थक जाते हैं? So that strength needs to be developed. Third thing is endurance, कि body में कितनी endurance है to adapt to different situation. For instance, हमने देखा होगा कि all of us or most of us are mostly allergic to as the weather change. जैसे ही एक बारिश होती है नज़ला जुकाम हो जाता है. तो does our body have that endurance to adapt to different weathers, adapt to different situation? Our body has flexibility element or not? क्या हमारी body कहीं और किसी और country में जाकर या किसी और zone में जाकर क्या हमारी body में वो flexibility है to adapt to that type of climate change, to adapt to those type of food, to adapt to those type of cultural aspects? Another thing is balance. How balanced our bodies are, how balanced our health is. So are we taking that balance in our body? Is our body's temperatures are fluctuating? Is our body's those hypertensive readings are fluctuating? हमारे body के blood works कितने consistent है? और ये सारी चीजें हमें बचपन से ही जो है वो बच्चों में develop करनी होती है by allowing them to be physically healthy, by allowing them to exercise, by teaching them to eat healthy so that they have a balanced body. They do not have issues pertinent to their body. और कितनी हमारी body में resistance है. हमने अभी कोविड की एग्जाम्पल ही मैं आपको दूंगी, देखा कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकली हेल्थ एंड वेलबीइंग वाइज तबाही मच गई. But in Pakistan, we were able to resist. The reason, one of the reasons was the high immunity, or maybe a reason that, our bodies are those, they are at a level where they can resist certain bacteria, they can resist certain virus. So that type of resistance, we need to attain when we talk about physiological resilience. Next slide, please. So there are some practical tips I would like to give to the parents कि आप ये कब से शुरू कर सकते हैं as early as your child is born. So it's very important as parents, as schools to understand कि age wise physical needs क्या हैं बच्चों की. So when the kids are born, their immediate needs is reflective rooting. Reflective rooting means कि कितनी stability है, क्या वो अपना head hold कर सकते हैं, क्या वो crawl कर सकते हैं, उनकी body कितनी coordinated है. जैसे ही आपके बच्चे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पर आते हैं, दैट इज अ स्टेज वेयर वी सी के बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स कितनी डेवलप्ड है, ग्रॉस मोटर स्किल्स कितनी डेवलप्ड है, बच्चों के अंदर एजिलिटी कितनी है, उनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन कितना है. When kids get into the primary schooling age, इसमें हम देखते हैं कि बच्चों का स्टेमिना कितना है, बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी एंड्योरेंस कितनी है उनकी बॉडी में. As they become teens, we see that what are their hygiene practices, what are their nutrition practices, are they getting obese or are they targeting their physical activities. So ये कुछ components होते हैं age wise physical development की, that as parents and schools we need to understand. इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको 10, 8, 5, 3, 2, 1, 0 का रूल बताया था. So adhere to that rule. This rule inculcates a lot of healthy practices in a human being. Other than that, it's very important to give sun time. Sun जो है वो vitamin D की सबसे ज़्यादा natural source है. So every single day as you get up, as your kids get up, just go out in the balcony and give a sun time. It's very important to have sun time. आप balcony में जाएं, breathe in, breathe out, stretch your hands, stretch your body, and give that sun time to yourself as well as to your kids. It's also very important कि once a month हम अपने ऐसे trips plan करें बच्चों के साथ जो उनको nature के करीब ले जाएं. They can breathe fresh air, they can see green plants, they can see all naturalistic things all around them. In Karachi is a concrete jungle, you see. So we need to take our kids at least once a month to some nature places. Similarly, it's very important कि हम बच्चों को एक या दो sports में जरूर engage करें. Like mine sports are chess,
Mind sports are quiz games, mind sports are board games. इसी तरह बैडमिंटन है, क्रिकेट है, some kind of जो हम पुराने जमाने में खेलते थे, हमारे अपने जमानों में बहुत फिजिकल एक्सरसाइजेज होती थी, जैसे बर्फ पानी है, खो खो है. Engage your kids in certain sports. It's very important to at least our kids should know 1 to 2 sports ताकि उनका स्टेमिना बढ़े, उनकी स्ट्रेंथ बढ़े, उनका एंड्योरेंस बढ़े, and they should feel physically active. Because बच्चों को सिंपल एक्सरसाइज करवाना या उनको वॉक पे लेके जाना, it's very difficult. So if kids are engaged in sports, they will have a lot of time to, engage in play, and through that play, they will develop physical endurance. At least avoid के हम 1 घंटे से ज्यादा बच्चे को लीजर स्क्रीन टाइम ना दे, और घर में ऐसा 1 घंटा हम रखें जिसमें कोई भी स्क्रीन टाइम ना हो, and they will simply have everybody, every single person in the house in that particular time will have to go screen off. चाहे वो लेट रहे हो, वो बोर हो रहे हो, gradually आप देखेंगे in a week's time, you will start doing some constructive things. You need to give that screen off time to yourself and to your kids as well. Similarly, it's very important, जो मैंने पहले भी बताया था, कि अपने फूड, अपनी प्लेट को बैलेंस करें with the different nutrients food. And it's very important to focus कि जो हमारे फूड पिरामिड्स के जो different stages होते हैं, जिसमें हम कोई ब्रेड इंक्लूड करते हैं, वेजिटेबल्स इंक्लूड करते हैं, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करते हैं, एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन या मीट इंक्लूड करते हैं, एक पोर्शन ऑफ मिल्क इंक्लूड करते हैं. So design that plate which is full of nutrients. Similarly, very important point is do not become your child's doctor. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, पाकिस्तान इस वक्त ऑलमोस्ट टॉप कंट्रीज में से जिसमें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है. अब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ ग्लोबल इमरजेंसी, और ये होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो मेडिसिन को रेजिस्ट करना बंद कर देती है, यानी कि उसके अंदर इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर कि किसी भी मेडिकेशन से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती. एंड द रीजन इज, एज नेशन, एज पाकिस्तानी पीपल, we are pretty much inclined into taking medications by our own. We become our child's doctor. बुखार है, कालपुल दे दो, पेट में दर्द है, फ्लैजिल दे दो. All of these are activities that has a very bad adverse future implication on your child's health. So please do not become your child's doctor. Work very well on hygiene. हमारी hygiene practices are pretty much compromised. So teach children how to be hygienic. हम hygiene की practices सिखा के बच्चों की 30% of बीमारियों को कम कर सकते हैं. And last but not the least, understand your DNA. If you know कि आपकी कोई ऐसी genetic history रही है जिसके अंदर hypertension है, जिसके अंदर obesity है, जिसके अंदर heart के issues हैं, तो inculcate a healthy lifestyle for yourself and for your kids as well. Because genetic जो है हमारे issues हैं, जो हमारे health issues हैं, वो हमारे बच्चों में भी आ सकते हैं. So पहले से ही बच्चों को prepare किया जाए कि वो अपनी healthy practices को inculcate करें. And resilience is all about doing role modeling. So it's very important to role model healthy practices to your kids so they can adapt to it. Thank Next you slide. so much. Yeah, Dr. Shelina, actually, could we maybe we could upload your slide, your presentation on Facebook, because we are running short of time. But definitely, personally, if you've asked me, I would want, all these tips to be known to the students. We'll definitely put it up on the Facebook. Thank you so much, Dr. Shelina. And I'm sure the questions that are going to arise after, our fourth panel, we'll incorporate that, inshallah. Thank you so much, Dr. Shelina. Right. So my next question is to Dr. Ghazala Siddiqui. What is spiritual well-being? और soul की well-being होती भी है कि नहीं होती है? क्योंकि इतना सुनने में नहीं आता कि soul की भी nurturing होनी चाहिए. जी. So, and how does it help develop resilience? Over to you, Dr. Ghazala. Jazakallah Mr. Shakil. Assalamu alaikum to everyone. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yes, this is the topic that I think we are all quite, we all tend to actually maybe unintentionally ignore or it's neglected, and we need to really learn together. And I'm also learning. So it's just that I would really like to, at the very outset, I would like to acknowledge that all the three panelists, mashallah, Dr. Shelina, Niazi Sahab, and Sohail Sahab, so much has been said
that I'm glad that it's very specific. This is soul. So otherwise I would have been, out of words for to extend this discussion. So Jazakallah khair. Thank you so much for your beautiful presentations and very productive and informative. Now, as far as the soul is concerned, well, I would just have questions to ask, and then I will just do it quickly. What is well-being? I think well-being is all about relationships, and that relationship is with self and relationship with the creator and relationship with the creation. And these relationships, it's what is being. When we say well-being, what does it mean? Wellness of what, right? Wellness of the being. So then what is being? So being is me, like self. So what is it? It depends on how we understand, this is for us to understand, and it's difficult to at times. But simply putting it up, it would be something like, my body, myself is made up of my body, where the soul comes in, and that forms the me. So my body with the soul in. When the soul goes out, the body goes, it's dead, buried, and the soul goes up into the skies, right? So me is Allah has made my body and then blew the soul into my body, just like what he did with Hazrat Adam, basically. So that is the origin. And then when we talked about the relationship with self, and then relationship with Allah, the creator, and relationship with the creation itself. So then relationship with self would have what is the first thing to have a relationship or to develop a relationship would be to know what the purpose is. So the purpose would that would mean that, number one, knowing yourself, knowing myself. So we need to help our children know themselves. And what we know, the first thing, the foremost, is that we are the best of the creations. And that's what Allah mentions in his book as well, that you are the best of the creations as human beings. And everyone is unique. I love this, that everyone is unique. Each soul, each body, each person is unique. And that's the uniqueness that makes the children so special, and every individual individualistic and so unique and special. The second thing is thank Allah for his blessings all around. And the third thing is worship him, right? So these are the 3 points that actually determine the purpose, and we call them also the values, the basic values and beliefs that we have in life. Then relationship with Allah, the next one, the creator. Allah's plan, what helped me understand and build up the relationship is what's Allah's plan for me and for you, basically. So can we help the child understand what's the plan that Allah has for him, her, and me as well? So life has 2 parts. How can we explain it to the child? When we are born in this world. It's a beautiful world. You have a family, you have parents, you have so many blessings all around. And you see people dying. Don't be afraid of talking to the children of death. They see people dying. We have to take them to funerals. So the death, this is the life, that is the life on this earth. And then once the people die, the soul still exists. The body goes underground. The soul is eternal, lives forever, will get a new body, and it will live forever. So that is the world, that is the life after that, which will be forever. So life, number 2, is that life here is a test. So we have been born, Allah has sent us here as the life, and
to test us. So if we fail, we go to, someone go to hell, and if we pass, we go to Jannah. That is a very important, critical thing to understand about life, so that we can know the purpose and we can succeed in life. And then Allah is merciful, so he sent his prophets and the book and to help us, and he's very merciful. And wouldn't we want to be in Jannah with the prophets and with good people and to be next to Allah? And this is what happened with Hazrat Adam as well initially. And this is when he was obedient, well-being. When he defied, he went into distress. When he repented, this was resilience. He fell and then he took off again. And with the environment, serve and benefit. Again, as a couple of speakers here said, it's serving and benefiting, being able to help solve the problems rather than being a part of the problem. So that's the relationship with the environment. Once the child knows that, it puts him in the right frame of mind and right frame of soul, basically, and body and heart. So the body, mind, heart, and soul actually is the soul which encompasses all the three. If the soul is, जिसको हम कहते हैं, अगर रूह जाग रही होगी, if the soul is awake, is active, is connected to its creator, then all this will be subservient to the soul, heart, mind, and body, and the actions will be accordingly. Those will be the actions of the child, right? And will be successful. The value proposition here is that wings with roots. That means we have wings. These are the values, and wings are the skills and the attitudes, and roots are the values that we instill in a child through the soul, through the resilience. And okay. So how to these habits, if we can, I'll just take a minute more to enjoy. How can we have these habits which would actually keep his soul healthy and contented? Enjoy nature, as Dr. Shelina just said, enjoy nature with them, because that is where they get connected to Allah and to themselves the best, and to the environment. Establish the routines. They have to have a routine for Ramzan bhi aa raha hai, the whole year. They have to wake up early to bed and early to rise. Then the duas, namaz during the day, and duas, what my mother used to do, she would say the duas aloud, basically aloud, so that, and now I feel at this age ke ammi ne jo hame zor se, hum jab milte the unse, wo zor se duaएं पढ़ती थी, दुआएं देती थी हमें. That has set the vision for us in life, probably, and that has been a great help. Social habits, how do we give rather than take to the environment? Connect each act to Allah with consciousness, and this could be done very, very, very well through songs and stories as well. And I've talked about this, and this is a wonderful book that I just bought this morning. I got my hands on, Allah and Me. This is from Good Words. If you can get your hands on to this has beautiful, very short stories inside, with connections, with making connections at the child's level to Allah as well. Now, can we have that, please? There's a video, and if you could watch that with full mindfulness, and relate it to its two characters there. Yeah, I'll just stop sharing the screen, and then we can have that video, which is 45 seconds. Please watch this carefully and just see what kind of a child do we want to rear. Then we have to role model and have discipline in life. Yes, start please. These are the two characters. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. The choices are ours, and then our children are going to make these choices, which
what style to adopt. And the soul there will play the most important, the critical part. Jazakallah khair, Amur. Jazakallah, Dr. Zala. Indeed, it was, I would say that it gave food for the soul. The things that you discussed and shared. And as I think Sohail Saab bhi baat kar rahe the, these are common practices here at Generations that we try to distinguish between Dr. Zala ne to kahani Abdullah and the Billu, right? Yeah. So, okay, now we'll take up some questions, and there are lots of questions that the audience have asked, and I'll request Mrs. Naveen Jahanzeb to take some of the questions. Ji, over to you, Mrs. Jahanzeb. Right. Assalamu alaikum, everybody, and Jazakallah, Mrs. Uzma Shakil. So we've been having a lot of questions, but mashallah say our esteemed panelists have addressed a lot of them in their discussions, in their talk. So Jazakallah to all of you. Now, this question that I'm going to be asking is from one of our Facebook participants, Ms. Nadia, and quite a few other parents as well. And it is directed towards you, Fazal Sahab. And they would like to know, how would we distinguish between treating children equally and fairly? So a little elaboration on that, please. जी, equally and fairly, नॉर्मली ये हमारे यहाँ सिबलिंग, यहाँ क्वेश्चन भी था कि जब सिबलिंग्स आपस में लड़ें या कोई मसला खड़ा हो जाए, तो उस वक्त हमें एक तो एम्पैथेटिक लिसनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, और बजाय इसके कि दोनों बराबर और इक्वल उनको हम ट्रीट करें, फेयरली ट्रीट करें, यानी कि फेयरली जिसके साथ जो मामला बनता है वो देखा जाए, ना कि दोनों को हम एक ही छड़ी से डील कर रहे हों। तो ये बुनियादी फर्क है। नॉर्मली वालिदैन करते क्या है कि सिबलिंग्स की उसमें इक्वली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे होते, दोनों को बराबर किसी तरीके से, ताकि नॉर्मली मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ ज़्यादातर हम एज पेरेंट परमिसिव पेरेंट्स होते हैं। परमिसिव पेरेंट्स होते हैं जो चीज़ों को जाने देते हैं, और जाने देने के लिए फिर वो ये कर रहे होते हैं कि इक्वली ट्रीट करके, ताकि इस वक्त इसको रिजॉल्व कर दें, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दें इनका। तो फेयरली मीन्स नॉट कॉम्प्रोमाइज, इट्स जो जिसका राइट है उसको उसके हिसाब से ट्रीट किया जाए, और जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर है, नॉट ऑन कि वो दोनों भाई हैं और बहनें हैं तो इक्वल ट्रीट कर दें इनको। So Fazal साहब, if you would quote an example, maybe वो शायद उन लोगों के लिए थोड़ा और easier होगा to understand, a scenario or something. Yes. अब जब नॉर्मली ये सिबलिंग्स आपस में लड़ते हैं तो एक होता है जिसकी वजह से सब शुरू हुआ होता है, दूसरा फिर उसमें इन्वॉल्व होता है। नॉर्मली यही होता है, ऐसा नहीं होता कि दोनों एक साथ शुरू हो जाए, एक होता है। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि वो कौन सा वाला है जिसने ये गड़बड़ स्टार्ट की है, तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाए, ना कि दोनों की सजा मिल रही है जबकि एक उसमें घसीटा गया था और एक ने घसीटा था। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रैग करने वाला और जो ड्रैग हुआ है। तो ड्रैग हुए को भी वैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए जैसा कि ड्रैग करने वाले ने किया। तो ये है नॉर्मली कहीं पर भी दुनिया में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे वो सिबलिंग्स में हो या कहीं पर भी, एक होता है जो इनिशिएट करता है, तो वो उसके बराबर ट्रीट नहीं हो सकता जो जिसके साथ ये हुआ होता है और फिर वो बाद में इन्वॉल्व हो गया हो। तो इस तरह से है कि पहले ये मालूम करना और एम्पैथेटिक लिसनिंग के थ्रू और ऑब्जर्व करना कि किसकी बुनियादी गलती थी। तो बुनियादी गलती वाले की ट्रीटमेंट और है, और जो दूसरा गलती कर रहा था उसमें इन्वॉल्व होकर के उसकी ट्रीटमेंट और है। सो फेयरली ये है। Jazakallah. Thank you so much. And I'm hoping that Ms. Nadia, your question must have been answered. Moving forward, Sohail Sahab, आपसे ये पूछना चाहूंगी मैं. There is another question कि आजकल बच्चों को instant gratification बहुत ज़्यादा दिया जाता है. And that definitely has some adverse effects. तो वो पेरेंट्स कैसे उस चीज को थोड़ा सा मिनिमाइज करें और उसको प्रूडेंटली किस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन विद पेरेंट्स नाउडेज, जो मांगा है वो उनको फौरन ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। हाँ, आई थिंक इसका सबसे बड़ा सोर्स तो वजह जो है वो तो पेरेंट्स की अपनी लेजीनेस है। लेजीनेस बिकॉज यू हैव टू इंडल्ज इनटू डायलॉग व्हिच इज वेरी पेनफुल एंड डिमांडिंग। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक हम लोगों के यहाँ जितना फीडबैक
का कल्चर खराब है, उससे कई ज्यादा खराब तारीफ करने का कल्चर है। यानी हम जब तारीफ करते हैं तो वल्लाह सामने वाले को कभी ये समझ नहीं आता कि तारीफ हुई किस चीज की। बेटा तुम तो कमाल हो। अब इसमें क्या समझ आया आपको? बेटा आप जैसा तो दुनिया में और कोई बच्चा ही नहीं है। अब बच्चे को भी पता होता है कि मेरे माँ बाप ने दुनिया देखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मान लेते हैं। सो आई थिंक ये शॉर्टकट प्रेजेस ये क्यों होता है? क्योंकि वी आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट ड्यू टाइम ऑफ getting into conversation. You need this, wonderful. Why you need this? How will it change your life, your situation? What problem will it solve? मैं अभी एक कॉन्वर्जेशन किसी पेरेंट की सुन रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा। उसने अपने, हम लोग कुछ ऐसे घर में बातें कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बच्चे से, एक बेटे से पूछा अपने कि बेटा बड़े होकर what problem in this world you will try to solve? मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल। वरना बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, व्हाट अ चीप क्वेश्चन इट इज। आई थिंक बड़े होकर कौन सा प्रॉब्लम तुम सॉल्व करना चाहोगे और उसके लिए अभी क्या कर सकते हो। डायलॉग बहुत पेशेंस मांगता है। एज अ रिजल्ट वी गेट इनटू दी शॉर्टकट, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी आज देखिए ना, जहां भी जाएं तो वो मिलेनियल्स को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जेन जी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिली है ना। तो हमें वो फजल साहब ने बहुत अच्छी एग्जांपल वो दी थी कि अगर सेल नहीं हो रही तो सेल्स पर्सन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कस्टमर की काय की ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखें कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्योंकि सामने वाला अब उससे जान भी छोड़ानी है, उसे आगे भी बढ़ना है, तो वो उसको फिर ये वो जो हमारे यहाँ कल्चर चलता है, सबको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो मिलना ही चाहिए क्योंकि उसने पार्टिसिपेट तो किया है। So these all lead to those little chunks and pieces. That's how I look at it. Yes, Jazakallah. I think what I can get from your answer is कि investing time. तो वो जो time investment है वो बहुत ज़रूरी है when this discussion between the parent is up. Yes, please. इसमें मैं ऐड करूंगा कि बच्चों को 2 कान चाहिए, दुकान नहीं चाहिए। Yeah, very well said. Very well said. Right. We'll have just one more question, and this is for you, Dr. Ghazala. बच्चों की vocabulary माशाल्लाह से बहुत vast हो गई है, तो the word depression is, very much around, or parents are asking कि मुझे कैसे पता चले कि मेरा बच्चा depressed है, और बच्चे use this word so easily कि I'm depressed. So how do parents deal with it, and how do we guide children to deal with it? Yes, I would say it's the same as with the word boring, like, बच्चा कहता है I'm getting bored, and अगर आप देखा है तो I mean we really wonder कि बच्चा कैसे बोर हो सकता है, because the most important, critical, most highest level of machine that you have within yourself, your heart and your brain and your soul will never let you go down if you rely on it, basically. And we have to teach that to children, because जैसे जिंदानी साहब ने भी कहा, वो ये कह रहे हैं कि उसको हाथ में हमेशा कोई चीज, एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन चाहिए उसको, कि कोई चीज होनी चाहिए। ये वो होती है ना, उसको कहते हैं बच्चों को यू लोड देम विद थिंग्स बेसिकली, तो वो चीजें तो कभी उनको ग्रेटिफाई नहीं करेंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। But agar internal drive, the thing is resilience, well-being. One word, if you ask me, it's internal drive. Are we internally driven or not? Agar internally driven हैं, depression तो उस वक्त आता है जब आप externally dependent होते हैं। अगर आप independent हो जाते हैं अपने आप को manage करने में, और फिर of course आप world पे interdependent होते हैं, but then आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे क्योंकि आप बोर नहीं होंगे। आपके पास इतना कुछ करने का होगा कि आपकी अपनी वर्थ, यू शुड नो व्हाट योर वर्थ इज। यू आर अ यूनिक क्रिएशन ऑफ अल्लाह ताला, एंड यू हैव द होल वर्ल्ड इनसाइड यू। देयर इज सो मच दैट यू हैव टू डू एंड you can do basically. It's just that when we as parents fail to actually make the child realize that it's actually you that
the world has been created for you and you have not been created for the world. आपका मकसद है, आपको जब वो पूरा करना है, फिर तो एक एक लम्हा 24 घंटे में एक एक लम्हा इतना कम हो जाता है. 24 आवर्स में काम कहाँ खत्म होता है. और बच्चों में भी यही होता है. बच्चों में आप शुरू से जब आदत डालेंगी वक्त की कदर, हमारी वालदा हमें दुआ दिया करती थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को वक्त की कदर करने वाला बना दे, या अल्लाह मेरे बच्चों को अफू दरगुजर करने वाला बना दे, हिकमत के फैसले करने वाला बना दे. वो तो मुझे 60 साल बाद अभी समझ में आ रही है कि क्या थी वो चीज. So the thing is that वो डिप्रेशन उस वक्त होता है जब आप अपनी बर्थ को बिल्कुल कुछ नहीं समझते और फिर आप अपने आप को कचरा समझते हैं. फिर आपको होता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसको शायद हमने माँ बाप ने खुद ही उसकी बर्थ बताई ही नहीं होती. उसका पर्पस है लाइफ में, अल्लाह ने उसको अपने हाथों से बनाया, रूह भोंकी है और बहुत यूनिक. हर इंसान, हर बच्चा यूनिक है. कंपेयर ना करें एक दूसरे को प्लीज. बच्चों को उसमें भी डिप्रेशन होते हैं, ठीक है, और ना उनके लिबास को, ना उनकी चीजों को, क्योंकि आप मटेरियलिज्म, जब मटेरियल को एप्रिशिएट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे तो फिर बच्चा तो पीछे रह जाता है, फिर चीजें आगे आ जाती हैं. आपको बच्चे के एफर्ट को सामने लाना है कि तुम्हारी ये मेहनत, तुम्हारी ये थिंकिंग, तुम्हारा ये एफर्ट, तुम्हारा ये एक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा है. ऐसी करते रहना, दूसरों को देखो फायदा हुआ ना, डिप्रेशन नहीं होगा इंशाल्लाह. Yes, हो रहा है तो Jazakallah. दुआ पढ़ ले, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, शैतान करवाता है वो इंशाल्लाह. राइट? Yes, Okay. Jazakallah, Dr. Ghazala, very handy practical tips. And just to add, अगर फजल साहब से मैं एक लास्ट इसमें करूं कि goal setting, जो अभी डॉक्टर गजाला की भी बात से कि the children should realize their worth, their ashraful makhlukat, तो उसमें फिर they should have a goal in life. लेकिन अब उस goal को हम कैसे measure करेंगे? How will we be going back to that? If you could just shed some light, you know. And you have just a minute, sir, because you know we're running short of time. ठीक है. बेसिकली जब जैसे डॉक्टर शलीना ने बात की कि एक्सरसाइज पे जाएं, और पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं इनका हर वक्त एक्टिव रहना ज़रूरी होता है, और 5 से 17 साल वालों को एटलीस्ट 60 मिनट्स पर डे हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में जाना होता है, और हमें खुद एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक वॉक एंड 75 मिनट्स हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में जाना होता है. अगर हम इसको घर में स्कोर बोर्ड की सूरत में मेजर करना शुरू कर दें कि हर फैमिली मेंबर कितना एक्टिव रहा, और क्योंकि कहते हैं आप इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक आप मेजर ना करें. और जैसे सोहेल ज़ंदानी साहब ने कुछ मैसेजेस आपसे शेयर किए जो हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं कि तुम कमाल हो, तो इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के मैसेजेस जो हैं बेसिकली वो नेगेटिव मैसेजेस हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव मैसेजेस देते हैं और वो ग्रोथ माइंडसेट को छोड़ के फिक्स माइंडसेट पे आ जाते हैं. तो एक तो जब तक आप मेजर नहीं करेंगे तो मस्ट हैव सम मेजरमेंट सिस्टम, सम स्कोरबोर्ड एट योर होम, जिसमें आप अपनी रोजाना की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हो. एक बात. और दूसरा तारीफ के ऊपर जो सवाल था कि उसमें आप अगर अपने घर में एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसको हम कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट, अपने हर फैमिली मेंबर का एक कंटेनर हो, और हमने किसी की तारीफ करनी है तो वो लिख करके उसके कंटेनर में डाल दें, और महीने के आखिर में जिसकी सबसे ज्यादा हो उसके साथ सेलिब्रेशन होनी चाहिए, और जिसकी खाली रह जाएगी उसको खुद ही पता चल जाएगा आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, जिसकी वजह से कोई भी मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा. और ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि आपके बगैर बोले, बगैर शोर मचाए, बगैर इन्वॉल्व हुए इम्प्रूवमेंट आ रही होती है. जी. एक और मैं इस वालदा बात ने, को, सॉरी फजल साहब जी, मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करूंगी क्योंकि ये प्रैक्टिस हमारे बच्चे भी कर रहे हैं स्कूल में और माशाल्लाह इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जज़ाकल्लाह फजल साहब फॉर दैट. आई थिंक दिस सेशन हैज बीन playing an instrumental role in helping out parents to further, जो मैंने शुरू में कहा था कि वो ज़ौक़ पैदा हो रहा है. जिस तरह के सवालात आपके आ रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि लगता है कि हमें मज़ीद सेशंस इसी तरह के हमें करने पड़ेंगे जो आपका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है. एंड अ स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर शलीना, आप फेसबुक पे जिस तरह पेरेंट्स को रिस्पॉन्स कर रही हैं, रिस्पॉन्स दे रही हैं, दैट इज़ कमेंडेबल. मेरे तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ जनरेशन स्कूल. थैंक यू सो मच. अच्छा, अभी हम ये करते हैं कि गूगल फॉर्म पे फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है. तो हम 2 मिनट का अगर गूगल फॉर्म, आई एम श्योर कि ये स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो इसको आप प्लीज़ फीडबैक दीजिए.
और आपका feedback definitely we are going to incorporate that in our next webinars that are going to take place, and we'll chat में आ रहा है, sorry, आपके chat में आ रहा है, उस पे आप जाइए और उसको आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंशाल्लाह जो हम आइंदा वेबिनार्स करने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा उसमें. तो प्लीज टेक अ मिनट टू डू दैट. थैंक यू सो मच. जी डॉक्टर शलीना, आई अगेन वंस अगेन थैंक यू, क्योंकि माशाल्लाह आप जो है वो फेसबुक पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रही हैं. वुड यू वांट टू मे बी टेक 30 seconds and say something to the parents? Is Dr. Shelina there? Okay. Yeah. जी Dr. Shelina, I think you're muted. You're muted. जी Yes, आप I unmute could कर not लें. unmute. Thank you so much. This pandemic has been very tough on all of us. Please do not find कि आप कोई गलत चीज कर रहे हैं या आपसे कोई चीज गलत चीज हो गई. बच्चे पालना और बच्चों को बड़ा करना बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस होता है सबके लिए. ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है और एवरी डे हम एज पेरेंट्स एज केयर गिवर्स लर्न कर रहे होते हैं. So keep learning, keep showing good behaviors, good practices to your kids. Keep like this, gel in with the school and with the systems, and then let us all work together for kids. So it's a process of integration. Jaise hum kehte hain na, it takes Definitely. a village to educate a child. So be part of that village and be responsible citizens of that village. Thank you And so thank much. you so much for attending, everyone. And I like And this thank you so gesture. much, Generation I School. like this gesture. This is showing synergy. Right. Thank you for your feedback. I think अब अगर हम summarize करें इस पूरे webinar को, can we have that slide, Mr. Shahzad? Yeah. Right. Right. So for our child well-being and to have resilience, all body, mind, heart, and soul have to go together. So to become a master at any skill, it takes the total effort of your body, heart, mind, and soul working together in tandem, which अभी Dr. Shelina ने दिखाया था. Even body, mind, heart, and soul को एक साथ work करने के लिए हमें एक balanced personality के लिए इनमें अलग-अलग काम नहीं करना है, मिल के काम करना है इसमें, और इसमें बहुत हिकमत की ज़रूरत होती है. और and I would like to even like share, because that why did we conduct as Generation School, why did we take up this parenting webinar? और जो सोहेल साहब कह रहे थे resilience का word जो use किया है वो हमने बहुत deliberately सोच के लिया, क्योंकि ये जो resilience का word है हम पिछले 30 साल से एक दो word हम बहुत use करते हैं, resilience and grit, और वो हमें अपने बच्चों के अंदर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, not only during this time period, हमेशा से और आगे तक भी, क्योंकि we have that hope that these children today, they are going to lead पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, आई वुड से एट लार्ज, इंशाल्लाह. तो उनकी तरबियत आज ही से हमें करनी है. और मैं इस शेर पे इसको एंड करूंगी अल्लामा इकबाल के, काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में. तो हमें वो उनकी कहना चाहिए वो दुम पे आग लगानी है, और वो उसके लिए हमें भी जो है एज रोल मॉडल्स वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट. जो अभी फैजल साहब ने कहा था, नियाजी साहब ने कहा कि रोल मॉडलिंग करें, एंड आई थिंक डॉक्टर शनीला ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट, ऑल ऑफ यू. So again, I would like to extend my gratitude to our esteemed panelists, Dr. Shelina, Mr. Sohail Zindani, Fazal Sahab, and Dr. Ghazala Siddiqui. Jazakallah for gracing this event. And special thanks to Generation School for organizing this event. And when I say Generation School, I would really, my mentor, Dr. Ghazala Siddiqui, thank you for providing us with this opportunity. And I would like to especially thank the back-end team जो ये सारा काम कर रही थी, ये सारे corrections and like Yes. made all this thing smooth. I mean they're like
the whole team is there. वो सुबह से यहाँ पे है जो कहते हैं unsung heroes हैं. So they are the main people who had made this webinar a success. Alhamdulillah. And last but not the least, I would like to thank the audience कि आप लोग के questions जो आए, जो overwhelming questions हमें जो पिछले 4-5 दिनों से मिली थी, उससे हमारी भी बहुत learning हुई. आप यकीन करें कि हमने भी बहुत research की है इस सिलसिले में. तो जो है जैसे भी मैंने mention किया था, we are going to have series of webinars, और please stay tuned to our Facebook page and इसको दिखा दीजिए please contact. और चलें हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, मैं दुआ रिसाइट करती हूँ और इसी के साथ अल्लाह ताला खैर और आफियत रखे. रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीन. ऐ हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे और हमको परहेजगारों का इमाम बना दे. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम. And may Allah bless us all. Jazakallah.